Bells Overseas, the sound of your future. Hello everyone, this side Pankhudi from Bells. So today I'm going to tell you about the prediction related to your exam that is on 20th August 2022. So आज हम बात करेंगे जो पेपर हो रहा है IELTS का 20 अगस्त को क्या आएगा या क्या आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक रीडिंग की तो एकेडमिक रीडिंग आ सकती है आपके मॉडरेट लेवल की। जी हाँ, ना तो ये ज़्यादा हार्ड होगी ना ये ज़्यादा इजी होगी, मॉडरेट लेवल की होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके 2 पैसेज मॉडरेट लेवल के आ जाए, एक पैसेज डिफिकल्ट आ जाए। ये पैसेज 2 भी हो सकता है या पैसेज 3 भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। आई सजेस्ट कि आप कैम्ब्रिज 16 या कैम्ब्रिज 17 की ज़रूर प्रैक्टिस करना। अकेडमिक स्टूडेंट, जीटी की नहीं, अकेडमिक स्टूडेंट 16 एंड 17 प्रैक्टिस करना। सेम लेवल यू विल सी इन योर पेपर एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, जो लिसनिंग होती है एकेडमिक की भी और जनरल की, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। एंड जो लिसनिंग आएगी पेपर में वो होगी इजी टू मॉडरेट लेवल की। इसमें क्या हो सकता है, आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चन 1 वर्ड आएंगे एंड देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल सी MCQs, मैप और मैचिंग इन योर लिसनिंग। The speed will be okay, but you need to practice it if you want to score higher band. And again, I suggest do Cambridge 17. Coming on towards general reading. General reading भी आपकी easy to moderate level की आएगी. Yes, it is easy to moderate. There will be passage which will be very easy, or section I would say, text, which will be very easy, but there will be some text which will be a little tricky, but you will be able to solve it. And in reading, you will be seeing like headings, true, false, not given, and fill-ups. Now, talking about writing, in academic writing, there are chances that you will be seeing process or combination graph. It can be a bar graph or a pie chart. It can be a line graph or a bar graph. So yes, combination graphs are at a higher chances. Talking about general task 1, there are high chances that you will get formal letter in your task 1. So be prepared for that. I'm not saying that don't do semi-formal or informal, but yes, give more focus or give more attention towards your formal letter. Now last, that is writing task 2. In task 2, there are 2 types of essay that are at high chances to come in your exam. That is discussion essay and agree or disagree essay. So I hope this video will be very useful for those who are planning to give your exam on 20th August. All the best students. See you again with another prediction video. Thank you. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.